Assalamu alaikum. You guys can hear me? Most likely you can. Okay, great. All right. Um, we have 28 participants, still not as many as I would like to have, but still better than, uh, 29. So, okay, we're about to hit the 30 mark, but, but uh, but I'm also one of the participants. So it's 28 students anyway. Okay, so let's start with today's lecture. We've already waited for 7 minutes, and there are only 29 students over here. And I just hope that everybody is fine, everybody is healthy, nobody has gotten sick. So we are continuing with our online classes for now. Um, and and we have had like 2 weeks of review sessions. We saw a couple of examples uh, that we solved, and we are going to I think have maybe one more review session, but we should continue with learning new stuff. And for the new stuff, which something which is very important for you guys, if right now, and something which you might come in useful for each and every one of you in future, is the graphical user interface. The graphical user interface, you have been working with graphical user interface all your life. Like whenever you open a computer, you come across the graphical user interface and you use it in one way or the other. So what we are going to do, we are going to create our own user graphical user interface, but this time we are going to use it using Java. Java provides us with its own graphical user interface. There is a class, which is a very old class, which is used for this, and it's called Swing. There are other classes which have been introduced ever since Java had been introduced, but we are not going to go into those classes, so that we just keep the things simple, nice and simple, and so that you can always start with these basic user interfaces, and later maybe you may switch to other user interfaces if you like. But the basic understanding of user interfaces can be learned easily with Java Swing, and it's relatively easy to implement. So we are going to move with that. As you know that I normally tend to move with the basic stuff, and then we slowly try to make that complicated, so that you gain a good understanding of how a certain topic works. Okay, so with that aside, let me uh, let me show you some. So this is like the example one, and before I explain like how this example one works, let me display like how like what happens when I run this code. And Sir, we can't see your screen. when I run this code, this is the graphic user interface which pops up. Okay, and in this interface, you can see like we have the window, a window style window. Like normally when we have something like the Explorer, so we have something which is similar to this. Like over here, so we have something which is similar to this, and we have a single OK button which does nothing at all, and we have this button which gives us like move, minimize, maximize, the basic functionality. We get it like this. Okay, and this is like the most basic user interface that we can create using Java. So now I will explain like how this interface is created. So let's jump down into the code and see like how this works. Okay. Yeah. Oh, sorry. Let me share the screen. Sorry, when I put down.
Okay, I'll explain again. Okay, so sorry about that. Keep forgetting. Uh, so let me show you again. So let me. Still, people are still talking. Okay, so let me again run the code. So we have the main class and we have the example one over here. So this is the code that we are going to work with. We have the example one over here. There's some code written over here, and I will explain like how this code works. But before I explain that, I want to show you like what's happening when this code works. So we get a window like this, a user interface, and it has a single button. The rest of the user interface does absolutely nothing. You can like minimize it, you can maximize it if you like. Okay, and you have some minimize, maximize size functions over here. You can manipulate those things if you want to. Okay, and you can close it. Okay, so you can do the basic operations using this code, and this generates a Java file. Okay, sorry, this generates a user interface which you can manipulate using Java. So that's about it. Uh, Still, I will upload those soon. Okay. Um, Okay, so now let's see like how this code works. So let me run it again so that I can compare it with the code written over here. Um, so let's run it. So let's come put it over here, and now we'll see line by line what is happening. The first thing is like the JFrame. Okay, let me put it this way. Okay, um, so so whenever you are working with UI, you normally define a frame. Okay, frame is just like the frame of a picture. Okay, so you have a frame of a picture, and you can put stuff inside that frame. ठीक है अगर आपने कभी पिक्चर के फ्रेम में काम किया हो पिक्चर कहीं टंगी हुई हो तो आपको पता होगा कि उसमें पिक्चर का एक फ्रेम होता है फ्रेम के अंदर शीशा लगा होता है शीशे के पीछे आके पास तस्वीर होती है बाज़ और उस फ्रेम को आप मुख्तलिफ सेक्शन में डिवाइड कर देते हैं और जो तस्वीरें हैं वो उसके ऊपर जाती हैं तो यही बेसिक कॉन्सेप्ट जो इधर इस्तेमाल हुआ हुआ है कि जब भी आप अपना यूजर इंटरफेस बनाएंगे तो जो कुछ आप चीज़ डालेंगे वो एक फ्रेम के ऊपर डालेंगे ठीक तो जो फ्रेम है उसकी एक क्लास बनाई गई जिसका नाम जे फ्रेम है ऑब्वियसली जावा फ्रेम के लिए जे फ्रेम क्लास बनाई गई है ठीक अब जे फ्रेम क्लास का इन्होंने पहले एक वेरिएबल डिफाइन किया जिसका नाम फ्रेम नाम लिखा हुआ है एंड इज इक्वल टू न्यू जे फ्रेम ठीक है तो अब आपको याद होगा हमने क्लासेस पे काम किया था जो क्लासेस पे काम कर रहे थे तो वी वर डिक्लेयरिंग all the objects by using the new keyword and then we used to have jframe और यहाँ पे हम ब्रैकेट्स डाल देते थे ठीक ब्रैकेट्स डालने से ब्रैकेट्स डालने से पता चल जाता था कि दिस इज अ क्लास व्हिच वी आर क्रिएटिंग और उसकी इंस्टेंस हमने बना दी ठीक है तो यहाँ पे हमने मेमोरी एलोकेट कर दी है तो हमारी जो पहली क्लास है जे फ्रेम की वो क्लास बन गई है इस पॉइंट पे ठीक उसके बाद हम इसी फ्रेम क्लास का हम एक चूंकि जे फ्रेम है कुछ हमारे पास डिफॉल्ट फंक्शन हमारे पास गिवन है इसमें है सेट डिफॉल्ट क्लोज ऑपरेशन जे फ्रेम डॉट एग्जिट ऑन क्लोज ये हमने हमने ये से उसको बताते हैं कि जब यहाँ पे मैं क्रॉस दबाऊं ठीक है इफ आई क्लिक ऑन दिस क्रॉस और या फिर मैं यहाँ पे क्लोज का फंक्शन ये क्लोज के वैल्यू सेलेक्ट कर लूंगा इधर पे तो ऐसे में ये क्या करेगा तो इसमें ऐसे में ये पूरे ऑपरेशन को ये बंद कर देगा ठीक है बाज़ क्या होता है कि आप इसको यहाँ से बंद तो कर देते हैं लेकिन ऑपरेशन पीछे चलता रहता है ठीक
तो इसमें क्या होगा, जब आप ये बंद करेंगे तो ऑपरेशन इटसेल्फ विल क्लोज। ठीक है, अभी मैं वो दिखाऊंगा ये इसका क्या मतलब है। तो चलिए दिखाई देते हैं इसको यहाँ पे, इसको इसमें आते हैं, लेट्स रन एंड डिबग। अब हम जब रन एंड डिबग करते हैं तो ये देखें यहाँ पर डीबगर आपका खुला हुआ है, तो जब आप इसको यहाँ से बंद करेंगे तो आपका डीबगर भी ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। ठीक है, ये बंद हो गया। अब फर्स्ट करके मैं इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, ये स्लाइड को हटाया था, मैं इसको रन एंड डिबग करता हूँ, तो ये डिबगर यहाँ पे खुला हुआ है। तो अब मैं जब इसको बंद करूंगा, डिबगर को बंद नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये बंद नहीं हुआ। ठीक है, तो जो ऑपरेशन है वो चल रहा है पीछे। ठीक है, तो जो कांटा के ऊपर क्लिक करते हैं, मैंने क्लिक ऑन द क्रॉस, so the operation is still running in the background. So what I want to do is, like, once I click on the cross, the operation itself should stop. So in order to do that, I write this line. ठीक है, आपने देखा होगा कि बाज़ वक़्त ऑपरेशंस होते हैं वो आप अपने इस्तेमाल करने से इसमें हो, कोई ऑपरेशन चल रहा हो। फर्स्ट थिंग, जैसे कि मैं साउंड का ऑपरेशन को मैं कर यहाँ पे अगर मैं क्रॉस दबाऊंगा तो ये डिस्प्ले तो बंद हो जाएगा, लेकिन ऑपरेशन इटसेल्फ यहाँ पे चलता रहेगा। ठीक है, तो मैं इसको बंद किया यहाँ पे। ठीक है, तो वी विल अज्यूम कि द ऑपरेशन हैज स्टॉप, बट इट हैजंट, इट्स एक्चुअली रनिंग ओवर हियर। ओके, so if you want to do something like that, so you remove this line। ठीक, अगर आप चाहते हैं कि ऑपरेशन जो है वो भी खत्म हो जाए जब उसके क्रॉस को क्लिक करूं, तो फिर आप इस चीज को एक्टिवेट कर देते हैं। So we have two questions. Okay. Um, Maybe it's just you. I have a pretty fast internet. But it's Pakistan, anything can happen. What is meant by instance? Instance का मतलब ये है कि आप uh, जब भी आप उसका एक ऑब्जेक्ट बना देते हैं, whenever you do something like new, whenever you write new, ठीक है, तो वी आर क्रिएटिंग इंस्टेंस। ठीक है, अभी तक जब आप ये नहीं लिखते तो वेरिएबल जो है ना हवा में होता है। ठीक है, यू यू जस्ट टेल द कंप्यूटर दैट you are going to, if you write something like this, which means like you are going to you create a variable, but you haven't specified what variable। ठीक है, कौन सा वेरिएबल कैसे पड़ा होगा, उसकी क्या प्रॉपर्टीज होंगी, you haven't specified that, but you just tell the compiler you're going to create something। um, when you write something new, so you just, when you call the constructor, जब भी constructor मतलब उसकी instance बन जाती है। ठीक है, so when something exists in the memory we call it an instance। ठीक है, तो इसकी हमने एक instance यहाँ पे create की हुई है। ये तो इसको हम instance कहते हैं। ठीक है, तो different instances can have different values। Okay, so that's what is called an instance। I hope that is clear। So the default operation, ये जो मैं बता रहा था आपको कि default operation was कि if you want to close it when somebody clicks on this cross, if you want the function to close, you do it this way। Okay. So that defines the frame। Then what we wanted was a single button on that frame। So again, the class to create a button is JButton। So what this means is that the frame will always have a button। Okay, so the button will need to be added to a frame। Okay, अब होता ही है कि ये इस तरह काम करती है कि जे बटन जो है वो किसी एक चीज को डाला जा सकता है, फ्रेम को भी डाला जा सकता है, फ्रेम के ऊपर कोई और चीज हो उसके ऊपर भी डाला जा सकता है। ठीक है, so the frame might have a picture and you can put the J button on top of that picture। ठीक है, so it can work that way। In this case we are putting J button on the frame। ठीक है, we are keeping things very simple, so that's why we're keeping the J button on the frame। So it's created the same way। The name of the variable is B, we create its instance, we write J button B is equal to new J button, और भी हम उसका जो ऊपर लिखा हुआ आएगा वो ओके आएगा। ठीक है, maybe we can write something over here as well। My GUI। So I think this will work। इससे ये होगा कि जब आप फ्रेम बनेगा तो उसमें my GUI लिखा हुआ आ रहा होगा। ठीक, और जब आप लिखेंगे J button B ओके तो इससे जो है आपका ओके लिखा हुआ आ रहा होगा। ठीक है, so let's run this। What I mean,
ठीक है, अब आप देखें यहाँ my GUI लिखा हुआ आना शुरू हो गया because we created a frame, we called the constructor, and in the constructor we pass my GUI. तो default operation ये है कि if you pass some value, that value will be written over here for the frame. Okay? तो अब ये my GUI है, ये आपका इधर भी लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है, so that you can differentiate between this frame or if some other frame is open, so you can differentiate it by giving it a name over here. Right? And then we created, if you look at this, we created a J button, और उसके जो हमने बाउंड्स हमने सेट किए हैं कि ये क्या साइज होगा उसका. Okay, let me explain the bounds as well. But before we explain that, we explain the size of the frame. If you look at the size of the frame, it says 400 by 500. So this is the width, 400, 500 is the height. It always goes width height. Okay, first will always there will be width, then it will be height. First will always be x, then it will be y. Okay, so width height is 400 by 500. If I wanted to make it squarish, so I will make it 500 by 500. Okay, so let's stop this, run this again. And now you can see like it's 500 by 500, but now the button is not entirely in the center. Okay, so the reason that the button was entirely in the center because I had made the calculations by which the button was being generated in the center. So what I'll do is let me close this. I'll show you like suppose suppose the size of the frame was 500 by 500. Okay, now we create a button and now we want to place the button. तो इसको आप set bounds लिखते हैं कि button dot set bounds. अब इधर आप लिखते हैं कि इसकी width क्या है, sorry यहाँ पे आप लिखते हैं कि उसकी x value क्या होगी और यहाँ पे आप लिखते हैं कि उसकी y value क्या होगी. ठीक है, x value, y value. So let me put them as 0. ठीक है, तो x0 है, y0 है और 100 और 40. 100 is the width of the button, 40 is the height of the button. Okay, so if I run this now, ठीक है, तो आपका बटन यहाँ पे आपका बटन बना है because x is 0 and y is 0. ठीक है, अब इससे पता ही चलता है कि let me come to paint. Okay, so if you have a frame like this, okay, so this is the frame. Okay, so something like this. जब फ्रेम की बात कर रहे हैं तो वी आर टॉकिंग अबाउट दिस वाइट एरिया वेयर वी विल डिस्प्ले एवरीथिंग. तो ये तो आपका टाइटल हो गया, टाइटल में आपका माय जीयूआई लिखा हुआ था. ठीक है, सो वी व्हेन वी पास माय जीयूआई इट सेड माय जीयूआई ओवर हियर, माय जीयूआई, and this was the frame. Okay, so this was the area. Now in this thing we have the the x increases in this direction. Okay, so x increases in this direction, and y increases in this direction. Okay, अब आपको ये ज़्यादा ऑड लगेगा क्योंकि ग्राफ में हम जब बात करते हैं तो y इधर से इंक्रीज करता है, y always goes up. ठीक है, but in computers in almost everywhere, really has it been different, but everywhere the y increases over from this direction. Now this point, like this corner. Okay, so this corner has a dimension 0 0. So this has the, sorry, not the dimension, the location is 0 0, which means 0, x value is 0, y value is also 0. And this point, like since we were creating, we had created the size of the frame to be 500 by 500. So in this case, this location was 500 by 500. Okay. So this was 0 0, this was 500 500. The thing is, like, if you want to draw any rectangle, you just need these 2 points. Okay, so initial x is 0 and final x is 500. ठीक है, तो आप अगर ड्रॉ करेंगे तो it just tells us like how long this horizontal line should be.
So the computer draws these two horizontal lines because the first horizontal line is also 500, second horizontal line is also 500. And then this tells us like how much the distance should be between the 500 line. So it tells us like the distance will be 500 in this direction and 500 in this direction. Okay, so then it will draw these two lines. तो ऐसे में आपको जो फ्रेम बनता है 500 by 500 का बनता है, ठीक है? So it just needs these two points to create a rectangle. So now when we create a button and we give it the point 0 and 0, so it is actually telling the button that you are going to be drawn from this point. Okay, वो इस point से start करेगा 0 0. And then we tell the button the bounds. Okay, the bound is 100 in this direction and 40 in that direction. There's 100 in the x in the width department and 40 in the height department. So ऐसे में जो आपका बटन है वो चूंकि 100 is more than 40, so 140 will be something like this. Okay, so that's why it was being created over here and it said okay. तो आपका जो GUI है वो इस वजह से इस तरह बना. Now if you want to have this button in the center, so which means like we have to go half in this direction. Width is 100 is the width and 40 is the height. So this is the width of the button and 40 is the height, and 40 is the height of the button. ठीक है, तो इतना बड़ा है, कितना चौड़ा है कितना मोटा है, चौड़ा है लंबा है, कितना लंबा है और कितना चौड़ा. ठीक है, तो ये इसको एक्सप्लेन कर रहा है और 0 0 एक्सप्लेन कर रहा है कि हम कहाँ से ड्रॉ करना शुरू करेंगे. तो अगर ये फर्स्ट का 10 by 10 होता so we were starting from 0 0 location, we were only going 10 by 10 or something like this. इस तरह का बटन बनता. Okay? But since we want to write something on the button, we want to show it as well, so we make it longer in the x direction and shorter in the y direction. Okay? So ये आप इस तरह create हो रहा है. Now if you want to create the button in the middle, so what we need to have half. We need to have half the x the width and we need to have half the height. ठीक है, इसका मतलब ये है कि ये इस तरह यहाँ से ड्रॉ, ये इस तरह करके आपका you will make something like this. If you want to make calculation, so you need a point which is like somewhere in the middle. ठीक है, तो अगर आप इसको आप 250 by 250 देंगे तो आपका जो बटन है ना वो आपका इस तरह बनेगा, इस तरह बनेगा, because it's 100 by 40. ठीक है, तो आपने ये पॉइंट दे दिया, आप कह रहे हैं कि हाफ बाय हाफ 250 by 250 अगर दे दिया तो वो इधर से बनना शुरू होगा. तो 100, अब चूंकि इसकी पूरी लेंथ जो है वो 100 है, सो वी नीड टू हाफ दिस एज वेल. ठीक है, तो आपको ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट, ये आपको इसके सेंटर से कोइंसाइड करना पड़ेगा. ठीक है, सो if you shifted 50 points in the x direction and you shift 20 points in the y direction, so your button will most likely will come here. ठीक है, इस तरह का बटन आ जाएगा. इसका मतलब यह है कि जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो आपका 250 बाय 250 नहीं होगा. आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें से आपको चूंकि 100 की पूरी लेंथ 100 है तो इसमें से आपको 50 माइनस करना पड़ेगा, और चूंकि इसकी हाइट जो है वो 40 है तो इसमें से आपको 20 माइनस करना पड़ेगा. तो आगे पास वो पॉइंट आ जाएगा कि जहां से अगर आप ड्रॉ करें तो आपका पॉइंट जो आपका स्टार्टिंग पॉइंट जो है, आपका बटन जो है, इट शुड बी राइट इन द मिडल. तो ऑब्वियसली इफ यू रिमूव दिस तो आगे पास यहाँ पे 200 आएगा, यहाँ पे आगे पास 230 आएगा. ठीक है, सो वन ऑफ यू हैज पॉइंटेड दैट आउट ओवर हियर. ओके, तो इसका मतलब ये है कि 200 और 230 हमें ये बटन को देना पड़ेगा. So we over here, we come over here. So it was 0 0. So we gave it 200, and we gave it 230, and now hopefully everything is fine. Our button will be created right in the middle. ठीक है, अगर
कोई गड़बड़ हो गई है मेरे ख्याल में. I think my that is a bit off. It will be 210. होना तो नहीं चाहिए था लेकिन okay. Let me check that. 40 माइनस करना पड़ेगा. Stop. आप सेंटर में आ गया. 210 की माइनस करना पड़ेगा. That is strange. Hmm. Hmm. तो फिर most likely इसका होना तो नहीं चाहिए. Uh, Let me check. तो फिर अगर हम इसको 0 0 करें और 0 और 20 करके देखें. Let's come over here. So if we make it 0, so when we run this, तो यहाँ पे 0 ये तो हमारा हो गया कंफर्म कि 0 से स्टार्ट हो रहा है. अगर हम इसको 200 रखें, 200 and we make it 10. If we play this, अभी भी 10 आ रहा है. सही, मैं बता दो सही रहा हूँ बिल्कुल. तो why did it work that way? Uh, that is strange. मेरी कैलकुलेशन होगी वाला बटन कैलकुलेशन होगी सही थी. I don't understand. If you make it 0 and we run this, तभी ये बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है. I don't understand why it wasn't in the middle. कैलकुलेशन बिल्कुल सही है इसमें. To 230. By this calculation shouldn't be this, right? So that was the point. Again, this is the center of the screen. So by our calculation is coming out to be here, but it should be over here. I don't understand like why these calculations are coming to be a bit odd. Okay, I'll look into that because I don't understand like why this is happening. Now you have a 10 if you write oh yes, yeah. Where do the change height? नहीं height change की थी तो height 250 by 250 है ना. तो width का मसला नहीं है, मसला height का और है ना. width का मसला नहीं है. मैंने जैसा आपको बताया था कि height जो है 250 by 250 है. If it's starting from 0 and 0, which means like it's drawing in this direction. ठीक है, आपका ये आपका ये इस पॉइंट से ड्रॉ करता है, टॉप लेफ्ट कॉर्नर से ड्रॉ करता है. तो अगर मैं इसको 250 by 250 ही दूंगा तो ये टॉप लेफ्ट कॉर्नर से ही ड्रॉ करेगा, तो आपका बटन यूं बनेगा. सही. तो ये मैं चाहता हूँ कि ये टॉप लेफ्ट कॉर्नर है, ऐसी जगह पे वहां से ड्रॉ करना शुरू करे कि आपको बटन जो है वो सेंट्रलाइज हो. ठीक है, तो दैट वाज माय गोल. इसका मतलब ये है कि मुझे इसमें से हाफ इसकी मुझे विड्थ मुझे सब्ट्रैक्ट करनी पड़ेगी ताकि ये इधर मूव कर जाए, और फिर मुझे हाफ इसकी हाइट सब्ट्रैक्ट करनी पड़ेगी ताकि ये ऊपर मूव कर जाए. ठीक है, तो आई वांटेड टू बी प्लेस्ड ओवर हियर, बट व्हेन आई प्लेस इट ओवर हियर तो मैं हाफ अगर सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो it draws it from here. I don't get it like why is it drawing from this point. Okay, um, so I'll check it again. Maybe I understood it incorrectly. Anyway, we know how to fix it. So we, instead of subtracting half of the height, we subtract the complete height of the button and it will place it in the correct position. Okay. So this is what we did.
and that fixed the problem that we were having. So it's not like something bad happens. So we just have to remember that if we are going to draw a button, it's in order to be drawn at the correct position, you have to subtract the complete height from the frame, and that will fix our problem. Um, so anyway, so we get the button in the middle that way, and we get my GUI over here, we get the button over here. So that's just how you are going to design the GUI. Okay, so we move forward. We look into okay. So let's look at the other lines. Now this is frame.set layout. So whenever you're defining a frame, you have to define a certain layout. When you pass null, which means like it will have no layout. Okay, so which means like okay, this is important because if you write no layout, it actually means that uh, that every other component in the J frame is going to keep its original width and height. Okay, so you have to pass a null over there. If you don't pass a null over there, it makes things really strange, and you will see why. So let me comment this out and let me run this again. And now you can see the entire button is occupying the entire GUI. Okay, so which makes it like very strange. Okay, so in order for all the components to retain their actual width and height, you have to pass null over here. तो ये उसी तरह है जिस तरह कहते हैं कोई चीज़ आप you have to just write this out. So because if you write this out, that makes things quite better. So it makes things much more better. So that's why you have to pass that. And set visible, obviously, if you can see the image or if you can see the window or not. ओके तो ये सेट विजिबल आप इसलिए करते हैं क्योंकि फर्ज करें कि आप किसी GUI पे काम कर रहे थे एंड और फर्ज करें कि ये मैंने प्ले किया I worked on GUI, I press on OK. So when I press on OK, it doesn't close the GUI, it actually makes it invisible. क्योंकि मैं चाहता हूँ कि इसकी जो ये इसकी इंस्टेंस जो चलती रहे, इसको मेमोरी एलोकेटेड रहे. Okay, so I want to have the memory allocated, but I just don't want to see the GUI. Okay, तो ऐसे में आप इसको set visible आप true रखते हैं और अगर जैसे ही आप चाहते हैं कि इस GUI को खत्म हो जाए तो आप set visible dot false कर देते हैं. तो you pass a false, so it will stay in the memory, but it will just not be shown to you. Okay, तो उसके लिए हम set visible हम true या false रखते हैं. So once we do all of this code, we create a simple GUI that I showed you, and it was showing a simple OK button on top of that. So now moving from this point to set visible, just set visible बता दें. Set visible ये होता है कि जैसे मैं इसकी एग्जांपल देता हूँ यहीं पे अभी मैं set visible नहीं था, जैसे ये इसकी एग्जांपल देते हैं. होता ही है कि if you have something like this, if suppose विंडोज साउंड परफॉर्मेंस पे क्लिक करते हैं तो ये देखें ये आपका साउंड प्रॉपर्टीज खुल गया. ठीक है, मैं चाहता ये हूँ कि साउंड प्रॉपर्टीज तो खुल जाए लेकिन साथ साथ ये जो विंडो है ये भी छुप जाए. ठीक है, बिकॉज एज मेनी विंडोज यू हैव, जैसे जितनी ज्यादा भी विंडोज ओपन होती हैं ना तो वो इट मेक्स द GUI वेरी क्लटर्ड. आपको दोनों में स्विच करने में प्रॉब्लम होती है. तो नॉर्मली लोग क्या करते हैं कि जैसे ही मैंने एक कोई बटन पे क्लिक किया तो ऐसे में वो चाहते हैं विंडो जो है ना यूजर को नजर ना आए ताकि ना उसका जो फोकस है वो ऐसे इस विंडो पे रहे. हिज फोकस इज नॉट लॉस्ट. तो ऐसे में हम इसकी विजिबिलिटी को खत्म कर देंगे. वी विल सेट इट, विल टेल इट द कंप्यूटर नॉट टू शो दिस विंडो. विंडो शो नहीं होगी तो इसलिए आप उसमें चेंजेस नहीं कर पाएंगे. ठीक है, तो फिर जैसे ही आप कोई ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं उसको ओके कर देते हैं तो विंडो दोबारा शो हो जाती है. तो दे हैव सो जस्ट टू मेक अ विंडो इनविजिबल you set its visibility true. अच्छा, अब इसमें इनविजिबिलिटी का मतलब ये नहीं कि ये ट्रांसपेरेंट हो जाती है, उसका कांटे वांटे काम करे. इसका मतलब है कि ये आपको नजर ही नहीं आ रही, अब इसका इंटरेक्ट ही नहीं कर सकते. ठीक है, बट विल स्टे इन मेमोरी.
ओके, ये नहीं है कि विंडो बंद हो जाएगी, किसी टाइम पे भी मैं इसको दोबारा इसकी विजिबिलिटी को मैं ट्रू कर सकता हूँ, फिर से मेरे पास विंडो विजिबल हो जाएगा, फिर मैं उस पर काम कर सकूँ। तो ये सेट विजिबल से ये काम करता है। आई होप दैट इज अंडरस्टूड। अब हम एग्जांपल नंबर 2 पे आते हैं। एग्जांपल नंबर 2 क्या है कि अगेन वी क्रिएट अ न्यू जे फ्रेम, इसका नाम है बटन एग्जांपल। ठीक है, तो well the previous one was button example, so we can call it the text field example। और JFrame में देखा, JFrame का टाइटल होगा text field example होगा। Again we set the default close operation, JFrame exit on close, so if we close it the frame will go away, the program will end। And then I define a text field। text field क्या होती है? text field ये होती है कि ये जो है आपका चैट में मैं जहाँ पे लिखता हूँ, so I'm actually typing all of that in a text field। ठीक है, तो इसको text field कहते हैं। ये text box भी कहते हैं, कुछ GUI में इसको text box कहा जाएगा, यहाँ पे इसको text field कहते हैं। So if you want to have a GUI and you want the user to write something in that GUI, okay, write something over there, so you define a text field। And again, similarly to the button, you define where the text field will be placed and what will be the width and height of the text field। Okay? So यहाँ पे हमने जो text field बनाई, इसकी जो bounds है हमने 50-50 पे start होगी और 150-20 इसकी width और height होगी। Then we define a J button which says click here। इसकी जो सेट बाउंड्स करते हैं वो हम 50-100 और 95-30। तो इस बार बटन ज़्यादा छोटा होगा, उसको क्लिक हेयर लिखा हुआ होगा और ये इसकी डायमेंशंस होगी। अच्छा, तो अभी मैं सिर्फ इतना शो करता हूँ। सॉरी, यहाँ पे एग्जाम्पल 2 और एग्जाम्पल 1 को हम गायब कर देते हैं। And we run this। Okay, so we have a text field over here। In this text field we can write something and we have click here, we click on this and it says welcome to swing। I will दिखाऊंगा yes welcome to swing क्यों लिखा हुआ है। ठीक, so we can write something over here if you want to। Again if I click on welcome to, it will change that into welcome to swing। तो ये बटन है, जब हम बटन क्लिक करते हैं वेलकम टू स्विंग ये काम करता है। ठीक, अच्छा, अब क्वेश्चन ये है कि बटन जो था पहले काम नहीं कर रहा था, अब क्यों काम कर रहा है। ठीक है, तो दैट इज द क्वेश्चन। So that is where this action listener comes in। ठीक है, अब आपको याद होगा कि मैंने आपको एक दफा बताया था कि whenever you have GUI running, so it's a continuous while loop। ठीक है, ये कंटिन्यूस वाइल लूप होता है जो कि हमारे इनपुट का इंतजार कर रहा होता है। जब तक हम इनपुट नहीं दे रहे होते तो शोइंग अ कर्सर ओवर हियर एंड इट्स डिजाइंड दैट द कर्सर शुड ब्लिंक, तो इट मेक्स इट विजिबल एंड देन इनविजिबल, विजिबल एंड विजिबल। ब्लिंक इसलिए करता है क्योंकि अगर ब्लिंक ना करता तो पता नहीं चलता कर्सर है किस डायरेक्शन। ब्लिंक करता तो समझ में आता है कि कर्सर इस जगह पर है। ठीक है, तो आपके अपने बेनिफिट के लिए ना ब्लिंक डाला हुआ। तो ये हर वक्त जो है ये हमारे जो भी हम एक्शन ले रहे होते हैं इट्स ऑलवेज लिसनिंग टू दोज एक्शंस। तो अब जैसा मैं माउस का एक्शन में ले रहा हूँ, तो माउस का जो एक्शन है जैसे मैं ये है कि जब भी मैं इसको माउस लेकर आऊंगा तो इट विल शो मी टाइम, जब मैं माउस हटा दूंगा इट विल नॉट शो मी टाइम। ठीक है, तो ये एक एक्शन लिसनर है, इसके ऊपर डिफाइन हुआ है जो कि विच इज रिस्पॉन्डिंग टू वट एवर आई एम डूइंग ओवर हियर। ठीक है, तो वो इधर भी रिस्पॉन्ड करे, वो इधर भी रिस्पॉन्ड, इधर रिस्पॉन्ड करे, इधर भी रिस्पॉन्ड करे। तो व्हेन आई डोंट क्लिक, ठीक है, तो यहाँ पे कर्सर यहाँ पे नजर नहीं आता। सो एज सून एज आई क्लिक, so it's now trying to listen whatever I'm doing in this text box। okay, तो फिर हम जब किसी बटन पर क्लिक करते हैं तो एक्शन लिसनर जो है वो फिर उसके बेसिस पे काम करता है। अब होता ये है कि हर बटन जो है ना वो आप उसका बटन कितनी दफा दबा दें वो बटन जो है वो कुछ रिस्पॉन्स नहीं देगा, बिकॉज देयर इज नो एक्शन लिसनर अटैच टू दैट बटन। ठीक है, एक तो एक्शन एक्शन लिसनर है जो कि जैसे इस चैट विंडो के ऊपर लगा हुआ है, और फिर एक एक्शन लिसनर है जो कि इस टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर लगा हुआ है। ठीक है, तो जब हम इसके ऊपर माउस लेकर आते हैं तो ये रिस्पॉन्ड करते हुए ये दिखाती है, और जब इसके ऊपर लेकर आते हैं तो ये रिस्पॉन्ड करके ये दिखाती, कर्सर दिखाती है। ठीक है, सो व्हेनेवर
वट एवर यू गोइंग टू डू, तो हर कंपोनेंट के ऊपर आपको एक्शन लिस्नर डालना होता है। तो जे फ्रेम है, जे फ्रेम पे एक्शन लिस्नर ऑटोमेटिकली एक्टिवेटेड होता है, ठीक है। तभी वो जब हम उसके कोई क्लिक क्लिक करते हैं, उसको सीरियसाइज करना, वो रिस्पॉन्ड कर रहा होता है। लेकिन हमें उसको बटन को बताना पड़ता है कि ओके सो दिस इज द बटन बट इट्स नॉट गोइंग टू लिसन टू माय एक्शंस, ठीक है। So then we tell the button, okay button, you have to add the action listener so that you can respond to my actions, ठीक है। तो उसका ये तरीका होता है, ऐड एक्शन लिस्नर, ठीक। उसके बाद दिस इज अ फंक्शन, ठीक है। अब यहाँ पे सा थोड़ी सी आपको ऐसा सोचना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको जो सिंटैक्स जैसा फर्क हो गया। अब देखें ये ब्रैकेट्स जो हैं ये फंक्शन के ब्रैकेट्स हैं, ठीक है। सो एक्चुअली आई एम कॉलिंग द ऐड एक्शन लिसनर फंक्शन ऑफ द जे बटन क्लास, ठीक है। क्योंकि जे बटन बी है और बी डॉट करो, इसका मतलब ये है कि बी इज अ जे बटन एंड आई एम कॉलिंग अ फंक्शन ऐड एक्शन लिसनर। तो यहाँ पे आपका फंक्शन स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे आपका फंक्शन बंद हो रहा है, बिल्कुल इस तरह जैसे कि ये मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये फंक्शन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और ये फंक्शन इधर बंद हो रहा है इस तरह करके, ठीक है। तो वही फॉर्मेट जो है वो इधर बना हुआ है, ठीक है। एग्जैक्टली वही सिंटैक्स बना हुआ है। जो फर्क है वो ये है कि इसके अंदर तो हमने एक ऑब्जेक्ट पास किया हुआ है, बी हमने पास किया हुआ है, ठीक। अम, इसमें जो है हम क्या करते हैं, हम एक्शन लिस्नर पूरे पूरे बना के पास करते हैं। तो ये लिखा हुआ है न्यू एक्शन लिस्नर, ठीक। तो न्यू एक्शन लिस्नर का मतलब ये वी क्रिएटिंग एन इंस्टेंस ऑफ एक्शन लिस्नर, ठीक है। तो ये इन ब्रैकेट्स के अंदर हम करते हैं। तो इंस्टेड ऑफ passing a variable which is an action listener, we just create the variable over here. This variable has no name actually, it's just created क्योंकि हम न्यू ने लिखा हुआ है, तो it's being created, it's going to be sent into this function, ठीक। अब अब इसके अंदर एक्शन लिस्नर के अंदर हम क्या करें, हमने लिखा हुआ है कि फंक्शन इज, इसके अंदर एक और फंक्शन डिफाइन किया which is एक्शन परफॉर्म। तो ये फंक्शन क्या कर रहा है कि ये इवेंट को चेक कर रहा है, ठीक। तो ये ऑब्जेक्ट एक्शन लिस्नर का वो बन गया, और ऑब्जेक्ट जो एक्शन लिस्नर का है, अगर हम कोई एक्शन परफॉर्म करते हैं तो वो ये काम करे। सो दैट इज व्हाट वी आर टेलिंग दिस एक्शन परफॉर्म टू डू, ठीक है। तो सबसे पहले हमने जो बटन है उसके साथ हमने एक ऑब्जेक्ट अटैच किया। ऑब्जेक्ट था एक्शन लिस्नर का ऑब्जेक्ट था। अब वो जो ऑब्जेक्ट है, मैंने जैसा बताया था, हर ऑब्जेक्ट के कुछ फंक्शंस होते हैं, तो उसका एक फंक्शन जो हमने डिफाइन किया वो एक्शन परफॉर्म किया। एक्शन परफॉर्म किया हमने, एक्शन इवेंट जो भी आया, ठीक है, उसको हमने कर दिया सेट टेक्स्ट कर दो वेलकम टू स्विंग। तो जब हम इसको प्ले करते हैं तो बटन इसमें ऐड हुआ है, और मैंने लिखा हुआ था कि जब भी बटन के ऊपर मैं क्लिक करूंगा तो द एक्शन परफॉर्म विल टेक द टेक्स्ट फीड एंड सेट्स इट्स टेक्स्ट टू वेलकम टू स्विंग, ठीक है। तो ये उसका टेक्स्ट जो है ये बदल देगा। तो व्हेन आई क्लिक ऑन दिस तो इसका टेक्स्ट को ये बदल देता है। आई थिंक वी कैन चेंज द बटन्स टेक्स्ट एज वेल। So button welcome to swing. So we can write a button text to it was click here. So you can say we can just like Y maybe here. I think this will work as well. So if we close this and run this again, when we click this, it changes it to Y. ठीक है। तो अब यहाँ पे हमने जो एक्शन परफॉर्म था उसके अंदर हमने जब टेक्स्ट फील्ड लिखा था, टीएफ हमने लिखा था। टीएफ के अंदर जो फंक्शन था वो भी सेट टेक्स्ट का था। उसमें हमने जब चेंज किया तो उसने पहले टेक्स्ट फील्ड का टेक्स्ट चेंज किया। जब मैं टीएफ को चेंज करके हमने बी कर दिया था विच वाज द बटन, तो उसने बटन का टेक्स्ट चेंज कर दिया। तो हम ये भी कर सकते हैं कि ये टीएफ है, इसको वाई कर दे, एंड वी राइट ओवर हियर वी हैव बी। तो जब अब हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे बटन के ऊपर, तो ना सिर्फ टेक्स्ट फीड को वाई में कन्वर्ट कर देगा बल्कि बटन का टेक्स्ट को भी वाई में कन्वर्ट कर देगा। नाउ इफ यू रन दिस,
सही है। अब मैं इस पर क्लिक करूंगा, टेक्स्ट फील्ड पे भी वाई लिखा आएगा, इधर ही वाई लिखा हुआ आएगा, ठीक है। तो आई कैन मेक चेंजेस टू बोथ ऑफ देम यूजिंग दिस एक्शन. So whenever you perform some action, so this changes whatever is in the text field. This also changes whatever over here. So what we learned is that if you click on the button, so an action will be performed, and whatever you will write over here, that action will be performed, ठीक है। तो इसमें यही होता है कि सपोज अब ये किस तरह इस्तेमाल हो सकता है, इस तरह इस्तेमाल हो सकता है कि सपोज I is the button, I make it read, ठीक है। और maybe I think it will work this way. Text field C shift colon slash नहीं कर रहा है इसमें, ओके डबल स्लैश, नो आप सब कर, ठीक। So now if I run this, let me stop this, stop this as well. Let me run this. So I think if everything is fine, अब देखें अब क्या कर रहा है कि इसने दिखा दिया कि इसने रीड क्यों नहीं किया इसको, अच्छा इस पे हुआ है। सो रीड, रीड करना, टेक्स्ट को हम रीड को नहीं छेड़ते, ठीक। पीडीएफ फाइल राइट, सही। तो अब इसको हम प्ले करते हैं। लेट मी क्लोज दिस, लेट मी प्ले दिस, ठीक है। तो हो सकता है आपके पास हो GUI हो जिसमें आपको फाइल रीड करनी हो, तो आप इधर आके फाइल का नाम लिख दें, बस कहेंगे जावा डॉट txt कर दें, कोई भी फाइल का नाम है। फिर जब हम रीड दबाएं तो वो क्या करे कि if this is fine, तो it will just tell us like that the file was read, ठीक है। टेक्स्ट में इसमें लिखा हुआ आ गया फाइल रेड, ठीक है। तो अभी उसे वैसे ही मैं दिखा रहा हूँ, हुआ उसे फाइल को रीड तो की नहीं है, लेकिन ये इस तरह से टेक्स्ट को चेंज कर दिया, ठीक। तो हो ये सकता है कि when we run the program, so by default it tells you like what you are supposed to add over here in this field, and when you click on read, that your file will be read, ठीक है। तो अब इस तरह GUI define कर सकते हैं मुख्तलिफ किस्म का, and it is going to perform different things this way, ठीक। तो ये है, this was another example of how you can work with text fields and how you can work with buttons. तो अब सिर्फ ये दिखाते हैं कि okay, once you create the button and once you create a text field, you have to add these button text field to the frame. So over here I add B, which is the button. I had a text field, which is the text field. Okay, once these buttons have been added, so I define the dimensions of the frame. I set the layout to null, and then I set visible to true. So that's why when I click on this, so I can see both the text field and the button over here, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं कि just to finally, just to make it much more clearer, we create something from scratch so that you guys can see like how this can be done. And we are going to create a very simple program which is going to uh, going to take the first name and the last name, and once I click on the button, it will say hello, hello, whoever there is. Okay, so in order to do that, I can simply come over at example 2. I've already done that in example 3, so the text so the code is uploaded. But just over here, I'll just copy this. I have commented this out, so instead of showing all of this like how I'm doing over this, I'll just copy this code and I'll use that code to create what I want to create. So I make this example 4. So this is let's call it name example. Name, I mean, greetings example. And I need actually 2 text fields. One text field is for the first name, the second text field is for the second name. So over here, I call it F name for the first name. I create a text field. So it's starting at 50, 50, and it's going, this is the width and height. So I copy this.
and then I create L name, which is a last name, and so this is F name, this is L name. So it's again at the 50 and it cannot be at 100 because if I put it at 50 over here, it will overlap the previous text field. So I have to give some space. So let's make it 100. Again, the dimensions are the same, 150 by 20. Then we have the J button. So it says get name. So let's make it get name. It's 100 and by 30, and again I cannot have 100 over here, so let's make it 150. ठीक है, तो पहले हमारा टेक्स्ट, तो इसमें क्या हो रहा है कि हमारा जो पहला हमारा टेक्स्ट फील्ड जो है वो इधर बन रहा है somewhere here. Second text field is being made somewhere here, and the button is being made over here. ठीक है, अब ये करने के बाद, okay, so let's do this much, and there's a get name, it says get name, and whenever the action we are adding the action listener to the button, and it's going to perform some action, but this is the old tag code. Currently it's doing nothing at all when I click on it, and then I write add B, add F name, and add L name. So I have to add F name, and then I will have to add L name. तो ये सब चीजें जो है हम उसको फ्रेम के अंदर हम ऐड करें. Frame is 400 by 400, so let's make it maybe so let's make it width is 200, height let's keep it 400. So we just run this. ये क्या किया इसने, टेक्स्ट फील्ड की उसने शो कर दिया, मैं सेव नहीं किया था इस वजह से. Oh, okay. Again, I keep forgetting. So it's example 4. Example 4. And we run this. Show ही नहीं हुआ. Okay, so अब देखिए हमने टेक्स्ट उसका छोटा किया था, तो it's not correct, so we'll need to fix that. तो आपको बाजू बात ये अच्छा है कि सबसे अच्छा तो ये होता है पहले से कैलकुलेशंस कर लें, उसके बाद आप चीज़ें ड्रॉ कर देंगे. जस्ट इन केस यू आर लेजी, यू डोंट वांट टू डू द कैलकुलेशंस, you can just do it on the fly. So we can do it this way. We run the dialog, and we get something like this. Okay. फर्स्ट करके आप कहते हैं कि अभी मुझे पता नहीं चल रहा कि एफ नेम क्या है और ये क्या है, ये एफ नेम यही है या ये एफ नेम है, ये फर्स्ट नेम है, ये लास्ट नेम है. ठीक है, और वैसे भी अगर आपके पास फॉर्म खुला हो, यहाँ पे कोई लेबल्स ना हो, तो अगर कोई लेबल ना हो तो पता नहीं चलता ये टेक्स्ट किस चीज के लिए, टेक्स्ट किस चीज के लिए. ठीक है, so which means like you need to have some labels which show you like what is being shown over here, like what kind of data that we are going to do. अब हम इसमें ऐसा करते हैं, इसमें 3 लेबल्स लिखते हैं. पहला लेबल जो है यहाँ पे लिखा होगा फर्स्ट नेम, दूसरा लेबल जो है यहाँ पे लिखा होगा लास्ट नेम, और जब हम गेट नेम पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक तीसरा लेबल होगा जो कि एकदम से हमें डेटा शो कर देगा कि व्हाट वाज द फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एंड लाइक द शोज द ग्रीटिंग्स. तो इसलिए हम क्या करेंगे कि हम जाएंगे, जैसे कि जे टेक्स्ट फील्ड थी, तो इस तरह हम जे लेबल हम ये इसमें जावा में गिवन होता है फॉर क्रिएटिंग लेबल्स. यू हैव जे लेबल, जे label. Okay. F name, let's call it F label. And new, since it's label, so new J label. ठीक है. Set bounds obviously ये 50 पे start हो रहा है, तो हम इसको कर देते हैं, हम इसको 20 पे start कर देते हैं. Not 20. If this will stay 50, this will turn to 20. डायमेंशन इसकी 150 by 20 वही रखते हैं. ठीक है, तो ये एक हमने F लेबल हमने बना दिया. फिर हमने F नेम बनाया, फिर हमने J लेबल बना देते हैं. ठीक है, ये इसको इस सीक्वेंस पे लिखना जरूरी नहीं है. लेट्स कॉल इट L लेबल. ठीक है, इसको इस सीक्वेंस में ये एक मिनट, सॉरी,
एल लेबल, इसी को मैं दोनों लेबल्स पहले डिफाइन कर सकता हूँ, दोनों टेक्स्ट में दोबारा डिफाइन कर सकता हूँ। ये लिखा इसलिए है ताकि जिस ओरिएंटेशन में आपका GUI आए उसी ओरिएंटेशन में आप इन चीज़ों को लिखें। तो पहले लेबल आएगा, फिर पहली टेक्स्ट फील्ड आएगी, दूसरा लेबल आएगा, दूसरी टेक्स्ट फील्ड आएगी। तो इसलिए मैंने इनको इस तरह डिफाइन किया हुआ। ठीक है, ज़रूरी नहीं है। अभी 50 और ये 50, तो यहाँ पे हम 70 कर देते हैं। इसकी विड्थ 20 तो इससे जुड़ जाएगा। So let's make it 25 and let's make it 75. तो ये आ जाएगा। अब ये करने के बाद हमारे पास बटन है, और बटन के बाद हमारे पास ग्रीटिंग्स का लेबल है। ठीक है, एल लेबल किसका हम ग्रीटिंग्स कर देते हैं, ग्रीटिंग्स। और चूंकि आई वांट दिस लेबल टू हैव अ लॉन्गर टेक्स्ट, तो इसके हम डायमेंशंस चेंज कर देते हैं। लेट्स मेक इट 200. So the button is at 150. So let's make this label as 200. And since this is greeting, so we put it over here. तो हमने F लेबल बनाया था, और हमने L लेबल बनाया था, और हमने ग्रीटिंग्स का लेबल बनाया था। तो इसका मतलब है मुझे F लेबल भी ऐड करना होगा, L लेबल भी ऐड करना होगा, ग्रीटिंग्स भी ऐड करना होगा। ठीक है, तो I can do F dot add, and let's call it F label, and F dot add L label, and finally F dot add greetings. So now we can check again. अभी हमारा काम पूरा नहीं हुआ। क्या गड़बड़ हो गई? इसको ऐड हो जाना चाहिए था। We run this again. I save this. We run this again. मैं कोई चीज मिस कर रहा हूँ, ओवरराइट हो रहा है, राइट क्यों नहीं हुआ? If I don't add these, कहीं ओवरराइट तो नहीं हो रहा? This should have been added. Oh, ऐड हो गए, सॉरी, माय बैड। हाँ, सही कह रहे थे आप, कीप फॉरगेटिंग। एफ लेबल और एल लेबल में मैंने कुछ लिखा ही नहीं है, तो कैसे होगा? फर्स्ट नेम और जे लेबल फ्रॉम सेकंड नेम। ओके, और तीसरे को अभी हम ग्रीटिंग्स को छोड़ देते हैं, वी डोंट राइट ओवर देयर एनीथिंग ओवर देयर। ठीक है, तो अब हम करें। ठीक है, तो फर्स्ट नेम आ गया, आपका सेकंड नेम आ गया। आप देखें, इसको हम एडिट नहीं कर सकते, इट्स अ लेबल, तो वी कैन नॉट एडिट एनीथिंग ओवर हियर। ठीक है, और जो ग्रीटिंग्स है उसमें हमने कुछ नहीं लिखा हुआ है, ताकि व्हेन वी प्रेस द गेट नेम, सो द ग्रीटिंग्स विल बी शोन। ओके, अब जो गेट नेम है, हमें यहाँ पे जो भी फर्स्ट नेम लिखेंगे, सेकंड नेम लिखेंगे, तो हमें गेट नेम जो है वो इस नेम की बेसिस पे यहाँ पे भी ग्रीटिंग शो करेगा। ठीक, तो इसका मतलब ये है कि हमें जो एफ नेम है उससे हमने टेक्स्ट एक्वायर करना है, जो एल नेम है उससे हमने टेक्स्ट एक्वायर करना है। ठीक है, तो ये हमने काम करना है। सो इसका मतलब ये है कि over here f name, no, let's define a string, let's call it greet is equal to, let's make it an empty string. Then we write greet plus equal to f name dot get text। ठीक है, ये हमने उसका f name get text कर लिया, प्लस हम एक स्पेस डाल देते हैं। ठीक है, ताकि फर्स्ट नेम और सेकंड नेम के अंदर से डिफरेंस आ जाए। सो ग्रीड इज इक्वल टू f name plus get text, and greet plus equal to l name
टेक्स्ट इसको हम एल नेम के बाद हम फुल स्टॉप डाल देते हैं, ठीक है, ताकि बल्कि हम और ग्रीट में हम लिख देते हैं हेलो हेलो, ठीक है। सो सो हेलो, उसके बाद फर्स्ट नेम स्पेस सेकंड नेम और फिर एक्सक्लेमेशन मार्क, तो इट विल से हेलो सो एंड सो। अभी क्यों कह रहा है ग्रीट, अच्छा यूज नहीं की हुई कोई, हाँ अभी यूज कर लेते हैं इसको। तो ये तो हमारा स्ट्रिंग बन गया। स्ट्रिंग बनने के बाद जो हमारा लेबल था फाइनली वो था ग्रीटिंग्स, ग्रीटिंग्स डॉट सेट टेक्स्ट, ठीक है। तो जो हमारा लेबल था उसका हम टेक्स्ट सेट करें, और टेक्स्ट क्या सेट करें, हमने जो टेक्स्ट भी बनाया है वो हम सेट करें, ठीक है। तो हमारा फाइनल जो लेबल था कि जिसके अंदर हमने कुछ शो नहीं करा था, वो हम उसको कह रहे हैं कि जो हमारे पास नेम लिखा हुआ है उसको हम उधर शो करा दें। तो सिर्फ नेम शो नहीं करेगा, वो कहेगा हेलो वॉट एवर द नेम इज एंड एक्सक्लेमेशन मार्क, तो ये से ये कर देगा, ठीक है। तो हमने अब ये जो एक्शन परफॉर्म है, दिस एक्शन विल बी परफॉर्म्ड by the button. It will be performed by the button because we are adding the add action lister to that button. ठीक है, तो ये अब हम इसको अगर रन करें, ठीक है, तो first name, so suppose the first name is Taj, the second name is Khan, so we get name and it says hello Taj Khan, ठीक है। तो यहाँ बस लेबल था जो कि अभी कुछ नहीं था, उसके ऊपर जब हमने set text कर दिया, so when we click on this, so it will so खान साहब कर दें, ठीक है। तो get name, so it's saying hello Taj Khan साहब, ताजदार कर लें, गेट नेम हेलो ताजदार खान साहब, ठीक है। इसको खत्म कर दें, गेट नेम करें तो हेलो ये कर देगा। डाला हुआ है फाइनल कोड मैंने रिसोर्स पे डाला हुआ है, ठीक है। इट्स स्लाइटली डिफरेंट देन दिस बट मोर और लेस इट डज द सेम थिंग, ठीक। तो इस तरह करके आप इसका जो आपका वो है, जो भी आप कोड लिखते हैं, तो अब आपका GUI की बेसिस पे आपका जो जावा है वो रिस्पॉन्ड करना शुरू कर रहा है, ठीक है। तो अभी तक आपने देखा था कि हम अब हम सॉरी अभी तक हम क्या करें, इस कोड में हम इनपुट आउटपुट दोनों कर रहे हैं। इनपुट हम टेक्स्ट फील्ड्स के जरिए से कर रहे हैं, आउटपुट जो है हम गेट नेम के जरिए से कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो UI है इसको यूज करते हुए अभी तक हम कमांड लाइन कमांड प्रॉम्प्ट पे हम काम कर रहे थे, अब जो है हम GUI को यूज करते हुए हम GUI पे काम करें, और इससे देखें इससे आपका जो यूजर इंटरफेस है वो काफी अच्छा हो जाता है, लुक्स मच बेटर। अभी तक जो आप काम कर रहे थे काली स्क्रीन पे काम कर रहे थे, दैट वाज बोरिंग, जो डेटा आता था वो काला काला आता था, इट वाजंट दैट एक्साइटिंग, बट दिस इज एक्चुअली व्हाट मेक्स इट मोर एक्साइटिंग, ठीक। तो अब 3 या 4 का अपलोडेड है, if I'm correct, मैंने तो कल रात को अपलोड किया था। I'll look into it again. वैसे आपको इसकी परेशानी की जरूरत नहीं है इतना, क्योंकि अभी अगर आप लैब करें जिसमें अक्सर लोग क्या कहते हैं भाग जाते हैं, अगर वो लैब कर ले तो आपकी इसकी प्रैक्टिस खुद ब खुद हो जाएगी, तो आपको इस कोड की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो anyway, तो अब फर्स्ट करें कि ये तो हमारा कोड था, फर्स्ट करें कि आप कैलकुलेटर बनाना चाहते हैं, ठीक है, इफ यू वांट टू मेक अ कैलकुलेटर। तो वो भी इतना सिंपल है कि सिंपली आप जहाँ पे जो ऐड बटन हमने बी किया हुआ है, ठीक है, तो बटन जो था उसमें गेट नेम लिखा हुआ है, गेट नेम की जगह आप 1 कर दें, बटन की डायमेंशन है 100x30 की जगह आप फर्स्ट कहेंगे आप 30x30 कर देते हैं, 30x30, ठीक। तो B1 कर देते हैं कि दिस इज द बटन 1 और दिस विल बिकम B1, ठीक है। तो मैं इसको फिर से कॉपी कर लूँ और इसको मैं पेस्ट कर लूँ, तो ये B2 कर दूंगा मैं, B2 बटन 2 हो जाएगा ये, और यहाँ पे B2 डॉट, अरे भाई B2 डॉट सेट बाउंड जो है ये 50 की जगह मैं इसको 80 कर देता हूँ, 80 में नहीं इसको मैं 85 कर देता हूँ, 85, ये 30 30, तो ये B2 इधर हो गया, ये इसमें से ये मैं कोड को निकाल दूँ इसको वैसे ही जस्ट टू कीप थिंग्स सिंपल। अब इसमें ऐड हो रहा है तो ऐड B1 कर देते हैं, यहाँ पे ऐड B2 कर देते हैं, इनको मैं कमेंट आउट कर दूं या निकाल देता हूँ इनको मैं,
ठीक है, तो if everything is fine it should show me 2 buttons. कहाँ गलती कर दी? 140 और 74 एक्शन लिस्नर, इसको यहाँ से निकाल देते हैं। ठीक है, तो अब एक्शन लिस्नर जो है उनमें से बटन में से हटा दिया है। तो अब देखें ये, अच्छा ये बहुत छोटा हो गया बटन, बटन का साइज बड़ा कर देते हैं। 30 की जगह 50 कर देते हैं, 50 by 50 कर देते हैं, 50 by 50, इसको 50 by 50 कर देते हैं, and we do this। ठीक है, तो 50 by 50 अभी ओवरलैप कर रहा है, इसमें डिस्टेंस नहीं दिया, अब डिस्टेंस भी दे देते हैं भाई, ये मसला कर रहा है। लेट्स मेक इट 100, 100 नहीं करते, 110 कर देते हैं, 110, एंड वी रन दिस। ठीक है, अब 1 2, अब देखिए 1 2 तो इस तरह लिखा हुआ आ रहा है, अब हमें कैलकुलेटर चलाएं। ठीक है, तो इसमें जो 1 2 आपका जो लिखा हुआ आ रहा है वो यूं लिखा हुआ आ रहा है, बीच में थोड़ा सा गैप है। ठीक है, तो सो यू कैन मेक समथिंग सिमिलर टू दिस कैलकुलेटर बाय हैविंग दीज बटन्स ओवर देयर। ऑब्वियसली आपको हर बटन के ऊपर लिस्टर डालना पड़ेगा ताकि जब मैं 1 पे क्लिक करूं तो यहाँ पे 1 लिखा हुआ आ जाए। ठीक है, तो देखिए ये टेक्स्ट फील्ड है, तो मैं जब 1 पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे 1 लिखा हुआ आया था, तो आप यहाँ पे 2 लिखते हैं तो 2 उसके बाद आया था। ठीक है, तो ये स्ट्रिंग क्रिएट कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो we a string create करें, so it's showing you the number but it's actually creating a string over there। ठीक है, तो पीछे ये 1 2 3 की सारा काम चल रहा है। ठीक है, तो अब आप जब कैलकुलेटर पे काम करें तो आपको समझ में आएगा कि ये जो चीज़ है इस तरह की क्यों ये कि ऐसे कैसे बनती है। सही है, अब ये स्ट्रिंग है इसलिए यहाँ पे कॉमास भी आ गए। ठीक है, तो दैट्स व्हाई दे आर एडिंग द कॉमास टू दिस स्ट्रिंग वैल्यू। अब नंबर्स में तो नहीं ऐड कर सकते कॉमास, इसलिए आपको यहाँ पे ये स्ट्रिंग वैल्यूज नजर आ रही है। ये तो सो दिस सो अब मैंने आपको जो चीज़ें बताई हैं अगर मैं उसके ऊपर जाएं तो आप यू कैन मेक अ वेरी स्टैंडर्ड कैलकुलेटर वेरी इजीली। ठीक है, ये बनाना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, प्लस माइनस करना। ठीक है, तो नाउ यू कैन मेक समथिंग लाइक दिस इफ यू वांट टू बाय यूजिंग व्हाट वी हैव लर्न टुडे। ठीक है, तो दिस कैन बी, लोग कहते रहते हैं कि क्या एक्सरसाइज करें, तो दिस कैन बी अ गुड एक्सरसाइज कि आप अपना कैलकुलेटर खुद ब खुद क्रिएट करें। तो आपको इस कैलकुलेटर को देख के आपको अंदाजा हो जाएगा कि कैसे कैलकुलेटर किया जाए। देखिए अब आप ये देखें, इंटेंशन जो नॉर्मली होता है वो आप एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं नंबर्स 1 2 3 4 यूं आएंगे, लेकिन कैलकुलेटर में उल्टे नंबर लिखे हुए होते हैं। ठीक है, तो दैट इज द कन्वेंशन दैट वी फॉलो, सो यू हैव टू फॉलो दिस कन्वेंशन एज वेल। और आप इस तरह पूरा अपना बना सकते हैं। अब ये जो है अंडर ये स्क्वायर रूट आप कैसे लेते हैं या स्क्वायर कैसे लेते हैं या ये कैसे लेते हैं, तो ये करने के लिए आपको पीछे जावा कोड लिखना पड़ेगा। ठीक है, सो यू हैव टू मेक एवरीथिंग वर्क करेक्टली। तो ये देखने से तो छोटा लगता है कि इतना छोटा सा ये कोड है, लेकिन इतना भी छोटा नहीं है। ठीक है, पीछे ऐसी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है इसकी जो करना पड़ेगी। So for your exercise, you can make something like this, but that is not the exercise for today. In the lab, you are going to do, let's check the lab. In the lab, the lab is simple enough. मैंने actually did not draw anything, so I use Excel to give you a good indication of what I want you to create. So this is a program that you will create in today's lab, which is it's called Marks Calculator. You have the first name, the label, then you will write your name over here. You have the last name, you will write your name over here, and then you will add the math, English, chemistry, physics, Urdu, Islam, and marks. These will remain empty. Okay, so you will write the marks over here, and then एक बटन यहाँ पे मिसिंग है, मैं डालना भूल गया था, तो बटन पे आप क्लिक करेंगे तो ये क्या करेगा, मार्क्स की बेसिस पे टोटल बताएगा, मार्क्स की बेसिस परसेंटेज बताएगा, और यहाँ पे आपके ऑटोमेटिकली ग्रेड्स आना शुरू हो जाएंगे। फर्स्ट यहाँ पे आपने मैथ्स में 20 स्कोर किया तो ग्रेड यहाँ पे एफ आ जाएगा। इंग्लिश में आपने 100 स्कोर किया तो ग्रेड यहाँ पे आई प्लस आ जाएगा। तो अब ये जो ग्रेडिंग स्कीम है ये आपने खुद से क्रिएट करनी है। ठीक है, तो वॉट एवर, सो वेन एवर यू क्लिक ऑन गेट मार्क्स, यहाँ पे कोई बटन होगा गेट मार्क्स, कुछ भी लेबल दे दें, तो उस पर आप क्लिक करेंगे तो टोटल आपका पॉपुलेट हो जाएगा, परसेंटेज आपका पॉपुलेट हो जाएगा, ये ग्रेड सारे पॉपुलेट हो जाएंगे। तो आखिर में ये बता देगा कि दिस स्टूडेंट हैज एक्वायर्ड दिस परसेंटेज मार्क्स।
ठीक है, तो वो आप नीचे एक टेक्स्ट लाइन लिखी हुई आ जाएगी. So that is what you are going to do for today. So that is the exercise for today. तो जब आप आए 10 बजे तो आते ही एक्सरसाइज करें. So okay, so that ends today's lecture. So we are beyond the time limit. So so I hope that this was interesting. I hope that फाइनली आपने कहा कि ओ फाइनली अब हम किसी जीयूआई में काम कर रहे हैं, तो ये इरादा था. ओके, ठीक है, अच्छी बात है. असाइनमेंट में आपने ये नहीं करना, लेकिन चले अगर आपको लगता है कि आगे असाइनमेंट कर सकते हैं तो ठीक है, आप कर लें. Okay, so that is for today, and if you, I will be there in the lab. Uh, okay. Okay, मैं lab में मैं हूँगा, so you can start. You don't have to wait for my Zoom meeting to start. Just start the lab, क्योंकि शुरू में आने का कोई इतना खास फायदा नहीं होता. So after like 15 minutes, once you have read the exercise, you have started the work, and then you get some complications, so you can ask them. So you just start working on it. I will start the Zoom meeting, I think 15 minutes late. So at around 10:15, I will start the Zoom meeting. So till then, I hope that you guys will show up, do something. 2-3 बच्चे ना हो क्लास में, ज़्यादा हो तो अच्छा है कि आगे प्रॉब्लम तो वहीं पे सॉल्व कर लो. Okay then, see you in class.